जय हिंद कैंडिडेट्स। मैं ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फ्रेंड्स, एनडीए और सीडीएससी के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी वेरी enthusiastically preparing for the friends. We are going to talk today on something which is very important. It's very mysterious, and most of the people, they fear this test. Yes, we are going to talk today about the screening tests which are so mysterious. Nobody is sure whether the person is going to cross the first stage or, well, people are confused. It has also been seen that the people who are recommended from one board, they get screened out from the others. And the people who have been screened out multiple times, yeah, well, they tasted success also. So ये टेस्ट क्या है और इस टेस्ट में किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, क्यों ये टेस्ट इतना मिस्टीरियस है, इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हर स्लाइड के नीचे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं और you understand which way I serve the young aspirants. I provide online guidance and also I give dossier assessment and counseling. In case you require any of these, kindly contact me. मुझे मैसेज कीजिए या मुझे कॉल कीजिए शाम के 6 बजे से पहले। Well, let's proceed on the most mysterious test, that is the screening test, which commonly is understood as PP&DT. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये टेस्ट बहुत मिस्टीरियस है और बहुत इनकंसिस्टेंट है और ये ऐसा अनप्लेजेंट फैक्ट है जिसके साथ आपको जीना पड़ेगा। You have to bear with this fact that the test is inconsistent and its results are many times surprising to the people. बताया था मैंने कि एक जगह से रिकमेंड हुआ कैंडिडेट अगले बोर्ड में जाकर के कभी स्क्रीन आउट हो जाता है और ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार स्क्रीन आउट हुआ कैंडिडेट एक बार चल करके कहीं रिकमेंड हो जाता है। तो इस टेस्ट की कंसिस्टेंसी के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे रीजंस हैं। अगर आप उन रीजंस को समझ लेंगे तो शायद आपका जो मेंटल डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाएगा। देखो, कोई भी चीज अगर समझ में आती है तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उस तरह से तैयार कर सकते हैं और सक्सेस या फेलियर जो भी है उसके लिए भी आप मेंटली और साइकोलॉजिकली तैयार रहते हैं। तो चलिए समझते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट 1999 में आर्मी बोर्ड्स में आया। इसके पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता था केवल उन कैंडिडेट्स के लिए जो डायरेक्ट एंट्री होते थे। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद, यानी एनडीए और सीडीएससी का एग्जाम पास करने के बाद, रिटन एग्जाम पास करने के बाद एसएसबी के लिए आते थे, उनके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता था। स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए होता था? जैसे मैंने पहले बताया, केवल डायरेक्ट एंट्री के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू introduction of a screening test, and the idea behind the screening test is to weed out
those people who prima facie do not deserve to be given 4 days of testing, full scale testing, and the hospitality for next 4 days. थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को कि क्या परिस्थितियां थी। मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ पे कमीशन की, जो कि लागू हुआ sometime in 1996 or so, और उसके बाद से कुछ ट्रेंड नोटिस किया गया, especially in the number of candidates and the quality of candidates those who used to appear during that time. There was a sudden increase in the number of the candidates appearing for the SSBs. और एक ये भी बात याद रखिएगा कि today the number of SSB, the service selection boards, Army, Navy, Air Force, सभी में increase हुआ है. Today we have got Jalandhar, we have got Guwahati, we have got Coimbatore. These are the added ones. एयरफोर्स का नंबर 3 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो कभी ग्वालियर में हुआ करता था, उसको दोबारा एक्टिवेट किया गया गांधीनगर में. सो एट दैट टाइम दीज the additional things, they were not in existence, and the footfalls per capita, I mean, you may say, in the selection boards, that was beyond their capacity to handle. ये फैक्ट. और उसके साथ साथ एक ये भी बात थी कि बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, this was the time when information technology was taking its roots very firmly and fast in our country, and because of that the awareness towards the armed forces and the SSBs has increased. Once upon a time, let me tell you, it was not the methodology about the SSBs and such like things. They were not known to the common people and not known to everybody. तो अवेयरनेस की वजह से कुछ ऐसे भी, और रादर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स आए जो बहुत सीरियस नहीं थे. They never thought of joining the officers cadre. They never explored what are the challenges in the armed forces. They started copying each other. If their friend is going for armed forces or preparing for the armed forces, वो भी करें. तो ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए 4 दिन के लिए टेस्टिंग, उनका रिजल्ट बहुत एनकरेजिंग नहीं होता था. रेयरली सच पीपल who have been non-serious candidates, they qualified the SSBs. Batches after batches, the results were so very poor that ultimately there came, people started thinking, क्या फायदा ऐसे कैंडिडेट्स को जो सीरियस नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, उनको 4 दिन रखने का मतलब क्या है. देखिए, इन आवर कंट्री service, joining the services of the armed forces, joining armed forces is absolutely on voluntary basis. इसलिए सर्विसेज में आप देखते हैं कोई फॉर्म भरने के लिए फीस नहीं लगती है, आपको आने जाने का किराया मिलता है. जब आप पहली बार किसी एंट्री के लिए आ रहे हैं, आपको सर्विसेज 4 दिन तक अपने पास रखते हैं विद वेरी ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी. लेकिन सर्विसेज कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करें कि कैंडिडेट हैज टू बी अ सीरियस कैंडिडेट, एंड द कैंडिडेट मस्ट बी शोइंग सम मेरिट एट लीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट. तो सिचुएशन ये बनी फ्रेंड्स कि द नंबर ऑफ पीपल appearing for the SSBs and the quality which was desirable बहुत mismatch हो गया. Number of conferences they were held up. The representatives of the DIPR and the service selection boards, they exchanged their views.
एंड फाइनली इसके बीच में काफी सारे कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज सारी चीजें हुई एंड फाइनली द थिंग विच हैज कम आउट टुडे वी कॉल इट एज द टेस्ट ऑफ PP&DT और द स्क्रीनिंग टेस्ट. Okay. But the aim, I am repeating here, that the aim was to weed out the people who prima facie, mind the words, prima facie. When I say prima facie, I am admitting that many a time the prima facie impression is elusive. होता है, बहुत बार लोग धोखा खाते हैं प्राइमा फेसी इंप्रेशन के चक्कर में. लेकिन फ्रेंड्स एक ये भी बात है कि वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स दे आर, यू नो, उनका माइंड एंड बॉडी, वी आर नॉट डीलिंग विद रोबोट्स. बहुत बार आप यू आर एट द पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस, समटाइम्स विद द सेम parameters, your performance is not all that good. So performance also comes and goes. There are ebbs and tides in your performance. So prima facie, many a time, well, it gives the fair impression. Many times it doesn't. I admit it very candidly. But the idea was that those people who prima facie, in the first impression, they don't deserve to be given 4 days of hospitality and not likely to make the grade. They must be kept out of the ecosystem so that the infrastructure and the efforts of the people is not stressed. As far as the structure of this test is concerned, friends, आपको पता है. लेकिन मैं आपको यहां पर from the academic angle I'm telling you that this test, the screening test or PP&DT, it includes all the 3 techniques. All the 3 techniques are represented here. It has got an element of psychological test. It has got an element of the interview, and also it has got the element or the representation of the group testing technique. So in a way, you may say that it is a kind of a mini SSB by itself or in itself. और ये भी याद रखिएगा कि साइकोलॉजिकल टेक्निक इंडिविजुअल टेक्निक है. इट्स नॉन इंटरैक्टिव टेक्निक. इट कैन रिप्रेजेंट योर कॉग्निटिव फैक्टर्स वेरी वेल. तो इसमें आपको एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया जाता है, आपको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट दिया जाता है और आपको एक स्टोरी लिखने को दिया जाता है. All these, they very well represent your cognitive level, आपका intellectual skills like perception, judgment, imagination, grasp, intelligence. All these factors, they are very well covered. Okay. And the next part is your interactive part, your social part. जब आप समाज के लोगों के साथ interaction करते हैं. So you say your things, you argue for certain things. So ये सारी चीजें interactive, you may say, whenever you are in the social situation where you interact with the people. So interactive and individual, both qualities are well reflected. Many times people, they talk among themselves. They find it very mysterious कि what are the criterion, किस स्केल या किस पैरामीटर पर किसी का कोई स्क्रीन इन होता है या कोई स्क्रीन आउट होता है. फ्रेंड्स, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि आप एक होलिस्टिक, एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक संपूर्णता में
एक इंप्रेशन अपना बनाते हैं, और वो इंप्रेशन, ये होलिस्टिक इंप्रेशन कैसे आता है? इस होलिस्टिक इंप्रेशन में सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर परफॉर्मेंस इन OIR. एन ऑफिसर हैज टू बी इंटेलिजेंट. आप OIR टेस्ट में जितना अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, आपके चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे. इसका ये मतलब है, कन्वर्सली आप इसको आप थोड़ा उल्टी तरीके से पकड़िए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस OIR में अच्छी नहीं है तो आपके चांसेस नहीं. देन जब आप इंटरैक्टिव सिचुएशंस में आते हैं तो आप अपने बोलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कंटेंट, मैनर एंड मैटर बोथ, रिमेंबर, इन सारी चीजों से एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं. द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू योर impression, okay, is your performance in the spoken part, either individually or in the group situation. So your individual narration, impressive individual narration, and your contribution, meaningful contribution to the group discussion, that creates the impression. और अगर इसमें अगर आप थोड़ा सा चूक गए, let's say if you have not participated, in the group discussions, or you could not narrate your story, फिर भी आप उस समय भी आपकी सिचुएशन थोड़ी वीक पड़ जाती है. ओके फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट अगर और ये टेस्ट इतना साइंटिफिक है, फिर भी लोग क्यों डरते हैं? Why people fear this? Majority of the people, they face certain issues. First thing is that during the group discussions in particular, the environment is very, very charged. The competition is very high. There are some people who shout in order to make their point. They shout over others. They don't allow others to speak. Very, very charged environment. Or इस charged environment में those people, even if they are having the merit, but if they are gentle, if they are a little mild in their temperament, or sometimes some people, they have got, उनकी voice इतनी तेज नहीं होती है, वो लोग दब जाते हैं. और there are certain people who are slow starters. They have got all the merit, all right, but they cannot fire right from the word go. They take some time to prepare. थोड़ा limber up, जैसे होता है ना, मसल्स को limber up करते हैं, तो कुछ देर के बाद फिर you can, start doing with your body, the muscles. तो इसी तरीके से some people, they are a little hesitant. Yeah, they are slow starters. So these people, they find themselves in the position of disadvantage. Or in the group discussions, people, they end up in confusion. Sir, the objective of the group discussion was emergence of a common story. और common story तो कभी बन ही नहीं पाती. We'll see. Definitely there is a reason for that. लेकिन majority of the candidates, friends, they face these issues. Highly charged environment, due to which the slow starters and the people with mild disposition, they remain suppressed. As far as the story is concerned, that we will see. तो देखो, वी मस्ट अंडरस्टैंड, कोई भी चीज होती है, अगर इसमें, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अगर आपको उसका रीजन पता लग जाए तो आपका मेंटल डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है. तो पहली बात आप ये समझें कि इन द आर्म फोर्सेस,
the group discussions either here or in the group testing technique. As a matter of principle, these group discussions are without any moderation or punctuation by somebody from the board. Candidates, they themselves start, they themselves come to the end. It's a matter of fairness. अगर मान लीजिए, imagine a situation that the armed forces or the selection boards में some moderator is there who says that, okay, now you speak and now you have not spoken or you have overspoken. You know? As sometimes you might have seen the TV anchors, they start moderating. अगर ऐसा हम moderator लगा दें तो क्या होगा? The same thing, the charges which are generally leveled on the TV anchors, that he appears biased towards somebody. So we cannot apply any system of moderator. याद रखिएगा. और जब moderator नहीं है तो definitely people they enter the group discussion as per their understanding. और यहीं पर गलती हो जाती है majority. ये जो fish market like situation जो आप कहते हो ना, मेरे लिए ये बात कहना ठीक नहीं है, बट कॉल स्पेड स्पेड. सत्य से मुंह मोड़ना भी नहीं चाहिए. ये सारी चीजें कैंडिडेट्स की अपनी क्रिएट की हुई है और मैं कैंडिडेट्स को भी नहीं दोष देता हूं, ये उनकी ट्रेनिंग का असर. आप जाते हैं कमर्शियल ट्रेनिंग एकेडमीज में और आपको बताया जाता है यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक. और मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं, जो लोग कमर्शियल एकेडमीज में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं. बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, दे हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी ग्रुप डिस्कशन एवर. कभी भी उनको ऐसा ना चांस मिला ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया. बोलते ही नहीं, उनको हेजिटेशन होता है. सो द इंस्ट्रक्टर्स ओवर देयर दे स्टिमुलेट यू. आप बोलो तो सही, बट यस, दिस इज ओनली हाफ अ साइड. In the group discussion, it is not only important to speak, but it is important equally to listen to others. और ये चीज तो आपको बताई नहीं जाती है कि दूसरे की बात सुननी भी है. तो आप बोलिए, बोलिए और फिर भी बोलिए. Speak, speak and speak. If you have entered the group discussion with this mindset, I am afraid that you are doing a complete disservice to yourself and to the prospects of others. Group discussion is a gentleman's process. आप दूसरे की सुनिए और अपनी बात कहिए. लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बात कहने के लिए गए हुए हैं तो आई एम सॉरी, दिस इज अ डिससर्विस. आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, बट ये अच्छी बात नहीं है. Okay. Now comes the discomfort by, sir, common story तो emerge ही नहीं करती. So please understand here that it is a technical impossibility. Common story emerge हो ही नहीं सकती. And when I'm making this statement, I'm making it with logic. कैसे? देखिए, ये जो इंडिविजुअल स्टोरी एंड द कॉमन स्टोरी, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक में GPE से, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, wherein the group members they submit their individual stories or individual plans and subsequently they present a commonly accepted plan to the GTO. वही कॉन्सेप्ट यहां पर लाया गया है, बट माइंड यू देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस here between the GPE and the group discussion for emergence of a common story in PP&DT. They're poles apart, and understand this. In GPE, group planning exercise, the input is common, but in PP&DT,
It is your own individual perception. How many people you have seen, how many people the others have seen may not be common. The age, their gender, their mood, these are the inputs, the environment. It is all left to your perception. So you have got your own set of perception, which is the input to your stories. Everybody in PP and DT has got his own set of perception. When this test was created at that time, it was accepted that the emergence of a common story is a technical impossibility, and the majority, most of the group discussion, the time I'm talking about, will be consumed only in sorting out the differences, how many people the candidates have seen, the number of people perceived by them, their age, their sex, their mood, their action, what they see in the picture. And as they speak on to convince each other, the qualities like their logic, like their perception, like their persuasive ability, all these things, that will become the input for the people. So I'm making this statement with absolute, logic, that emergence of a common story is impossible. Then, जब आप कहते हो कि the mild, gentle people, those people who don't have the gift of gab, they are at disadvantage. So friends, please remember, in a competitive environment where you have to show the one-upmanship, आपका आर्ग्यूमेंट दूसरे से बेहतर होना चाहिए. इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में अगर जहां पर है ऐसा एनवायरनमेंट, तो माइल्ड, स्लो स्टार्टर, द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक इन द फर्स्ट गो, ऐसा कैंडिडेट हमेशा डिसएडवांटेज में रहेगा, चाहे वो PP&DT में पार्टिसिपेट कर रहा हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन में, चाहे आर्म्ड फोर्सेज में, चाहे किसी और जॉब में. So you have to raise your level. Okay. Accept this reality that such a person is always at disadvantage. What's the way out? So the first thing I will say that please practice the intelligence tests. Okay. The more you practice, you'll come to know about the questions, the pattern of questions, the principle behind questions. Your logical faculty will start working on that. Okay. Then please rehash your concept about GD, what a group discussion is, and please spread awareness, friends, that the situation of fish market today, which is experienced by most of the candidates, mind you, it doesn't pain only to you, but it pains us also as assessors. We are not happy with the situation. It is the creation of, you and your trainers. Okay. It has to be a balanced blend of cooperation and competition, both wherein you make your point, you listen to others, and then you try to, make your arguments better than the other person's. Basically, friends, remember, it's a gentleman's pursuit. And let me tell you, since you are at the receiving end every time, so kindly take it as a responsibility to spread the word. Every test has got some strengths and some weaknesses. And so is this test. This test by no means is an exception. And any test which is created to assess the human beings has got certain advantages and disadvantages. Okay. So accept it as it is, or you have to participate. You need not outshout the people, but at the same time, you should not remain silent either. Many of the people, they say that, sir, I got disinterested because there are some people who are shouting at the top of their voice. They were not allowing others. So we thought
there's no point. Please remember, जितने भी लोग select हुए हैं, ever since this test has been, brought into practice, everybody has participated. There's hardly anybody who remained silent, and he has been assessed to be fit enough, for giving 4 days of further testing. So please understand these tests and accordingly prepare yourself and orient yourself for this test. आज के लिए इतना ही. Numbers नीचे लिखे हुए हैं, and for online guidance and dossier assessment, you can contact me. Thank you very much. God bless you.